Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf. Today I am going to talk about the mechanics of parturition and stages of labor we are going to discuss. But before that, one ayah from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ये आयत का एक हिस्सा है, सूरह अकाफ की आयत नंबर 15 का एक हिस्सा है. इसमें वो प्रेगनेंसी और डिलीवरी की बात हुई है, इसलिए ये आयत लगाई है. और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है. उसकी एक वजह अल्लाह पाक बयान कर रहे हैं कि हमलत कुरहम व वदा तो कुरहा, उसकी माँ ने उसको बड़ी तकलीफ़ उठा के उसको हमल का वक़्त गुजारा और उसको पैदाइश में पैदा करने के वाले प्रोसेस में भी, जनने के प्रोसेस में भी तकलीफ़ बर्दाश्त की. और वहमलहू व फिसालहू 30 शहरा, अल्लाह पाक इसमें वो मुद्दत रज़ात भी बयान कर रहे हैं कि हमल और मुद्दत रज़ात की मुद्दत तकरीबन 30 महीने के बराबर है. तो अल्लाह पाक ये वालिदैन के साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया गया है. एक रीज़न अल्लाह पाक ने ये भी बताई है कि इतनी मुश्किलात में माँ बच्चे को पेट में रखती है और उसको डिलीवरी वाला प्रोसेस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ डिस्कस किया भी है, तो कितना मुश्किल प्रोसेस है. अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए. So the delivery, onset of labor, we talked about the onset of labor. Onset of labor is initially due to the increased estrogen to progesterone ratio. Throughout the pregnancy, there are weak contraction of the uterus the mother can feel. Those weak contractions are present throughout the pregnancy, which are known as Braxton Hicks contraction. They are weak contraction. And their force of contraction, they are weak, very feeble contraction, but with the advancing age of the pregnancy, with the advancing stages of the pregnancy, the force of the contraction gradually increases in the later part of the pregnancy. And toward the end of the pregnancy, when the parturition has to start after 40 weeks of the pregnancy, these contractions become very strong, and once the sudden strong contraction, this initiates the cervical stretch because of the push over the head. Baby is pushed into the cervix of the uterus, and when the head of the baby causes stretch of the cervix, this positive feedback cycle of the labor contraction starts. So sudden strong contraction initiates the cervical stretch, and this causes the onset of the labor contraction. Labor contraction we defined in the previous lecture as well. Labor contraction is that contraction, every succeeding contraction is stronger than the preceding one. So हर आने वाली contraction पिछली से strong होगी. That will be labor contraction. A positive feedback mechanism to increase the every succeeding contraction operates there, and there are two mechanisms. हम जरा सा जिक्र आगे भी करेंगे. The hormonal positive feedback and the mechanical positive feedback. So every succeeding cycle of the cervical stretch leads to increase or stronger contraction than the previous one, than the preceding one. So the strong contraction leads to head of the baby is pushed into the cervix, and this cervix causes more strong contraction, and this further increases the stronger contraction. So this positive cycle continues till the delivery of the baby. So that's how the onset of labor. Hormonal mechanism of onset of labor is increased EP ratio. Onset of two types of the feedback we discussed in the previous lecture, in the last lecture as well. That is, one is the labor contraction leads to stretching of the cervix. पिछली slide पे भी देखा, strong labor contraction
baby is pushed, and more stretching of the cervix causes more and more contraction of the uterus. This is local mechanical mechanism. That is, cervical stretch sends signal to the body of the uterus to cause the more powerful, more forceful contraction, and it pushes the baby more and more into the lower segment of the uterus. And this is one positive feedback. Second is the labor contraction leads to the production of oxytocin. So labor contraction, stretching of the cervix causes production of oxytocin. So oxytocin production is because of the irritation of the cervix, and with every contraction, more and more irritation of the cervix structure, so more and more oxytocin is produced. A positive feedback cycle, a vicious cycle occurs, and which leads to finally delivery of the baby. So this is mechanical and this is hormonal. Both types of the positive feedback cycle operate, and they cause the delivery of the baby. So this is again a diagrammatically. That is the uterine contraction. This causes the push of the baby against the cervix, and this causes the neuroendocrine production of the oxytocin secretion, and this oxytocin causes further uterine contraction. So this is a positive feedback cycle. Another one, that is oxytocin, also causes the prostaglandin production, and this also causes the positive feedback. This is hormonal positive feedback. And the mechanical positive feedback is the local myogenic reflexes. That is, the cervical stretch causes more powerful contraction of the body of the uterus. Now, true and false labor contractions. True contraction, as I said, true labor contraction are those, each contraction increases the cervical stretch, and that causes each new cycle of positive feedback is stronger than the previous one. This is a true labor contraction. कि हर आने वाली contraction पिछली contraction से strong हो. अगर आने वाली contraction strong ना हो, तो this is no labor contraction. That is false labor contraction. That is the false labor contraction, when the contraction is not strong enough to cause positive feedback. क्या अगली contraction को strong ना कर सके, this is false labor contraction, and this fades away. The contraction gradually fades away. ये शुरू हो के बाद labor को, some women they feel pain, के pain शुरू हो गए, लेकिन they fade away. Because of this, they are not false true labor contraction, they are false labor contraction. Abdominal muscle contraction also contributes toward the delivery of the baby. This cervical stretch, and especially in the second stage of labor, अभी हम बात करते हैं what is second stage of labor. In second stage of labor, when the perineal muscles are being stretched, this causes very severe pain, and those pain signals are transmitted to sensory cortex, and sensory cortex stimulates the motor cortex for the abdominal contraction. So abdominal muscle, they also contract. So these pain signals from the perineal muscles, etc., the stretch of the vagina, etc., and the muscle stretching, this causes pain, and this pain initiates the reflex contraction of the abdominal muscles as well. So pain signals from the uterus and the birth canal, they lead to neurogenic reflexes in the spinal cord for the abdomen, in the spinal cord, and there are the contraction of the abdominal muscle. Contraction of the abdomen also exert pressure over the uterus, and so there is increased intra-abdominal pressure, and this helps the expulsion of the baby. Uterus का अपना force तो है, those are the smooth muscles. ये abdominal muscle, they also increasing the abdominal pressure. This helps the labor of the baby. And sometimes when you go to this labor rooms, and आप देखेंगे the woman in labor is also encouraged to contract the abdomen. So उसको कहते हैं कि जोर लगाओ. वो जोर क्या लगा सकती है? She contracts the abdominal muscles, and this also helps the delivery of the baby. So mechanics, that is, each labor contraction begins at the top. What is mechanics? ऊपर शुरू होके forceful contraction at the dome of the cervix, body of the cervix, and this contraction it pushes the baby. A wave-like contraction occurs. Top पे शुरू होती है, and it pushes the baby. Top पे strong होती है और नीचे से weak होती है. So each labor contraction begins at the top of the body of the uterus, then spreads downward to the lower segment, and contraction is stronger at the top, and each
So each contraction pushes the baby into the lower segment. ऊपर strong contraction है तो lower push हो रहा है. It is pushed into the lower segment of the uterus as well as to the cervix. फिर neck of the uterus भी जा रहा है. The frequency of these contractions occurs. What is the frequency? कितनी देर बाद ये contractions होती हैं? Frequency of a contraction. Initially, when the labor starts, the contraction may come after every 30 to 40 minutes. Contraction आई है, strong contraction, painful contraction आई और फिर सो गए. After 30 minutes or 40 minutes, दूसरी contraction लाई. And with the passage of time, ये labor proceeds and with progresses towards the end, it is coming every 1 to 3 minutes. हर 1 minute, 2 minute, 3 minute बाद contraction रहते. So initially start frequency थोड़ी होती है, 30 to 40 मिनट के बाद आती है, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है. एवरी 1 to 2 or 3 minutes पे देयर आर स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस. सो स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रैक्शन इज आल्सो इंक्रीज. शुरू में वीक कंट्रैक्शंस होती हैं और वो पॉजिटिव फीडबैक जो अभी पिछली स्लाइडों में डिस्कस करके आए, एवरी सक्सीडिंग कंट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर. सो स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है और स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है. स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस एज द लेबर प्रोग्रेसेस. सो द force, total force कितनी जनरेट करती है this uterine contraction? About 25 pounds of force is generated, which finally pushes the baby in these strong contractions. See, baby को push करने के लिए 25 pounds का तकरीबन पे. This is the body of the cervix. Mechanics that this causes the cervical sac. Baby of the head of the baby is being pushed into the cervix. Cervix में push हो रहा है, and this causes the myogenic reflexes locally and more forceful contraction mechanical. And this cervical sac is also sending signal to the hypothalamus for the release of oxytocin, and that oxytocin causes further. So the baby's head stretches the cervix, and cervical sac excites the fundic contraction. Fundus को ज़्यादा contract करता है, and fundic contraction pushes the baby down and stretches the cervix more. This is mechanical, and the cycle repeats over and over again. This is the mechanical. जो mechanical factor है वो यहाँ पे show हो रही है, and hormonal factor यही है. That is cervical sac जो हो रहा है ये तो mechanical है locally. Cervical sac is sending signal to the brain, to the hypothalamus, where oxytocin will be released from the posterior pituitary, and that will cause the more forceful contraction of this uterus as well. Those both positive feedback mechanisms are there. These labor contractions are not continuous contraction. अभी हम पीछे देखा है, they are repeating every 30 minutes, every 40 minutes, every 20 minutes, then every 1 minute. There is a period of relaxation between contraction. हर contraction के बाद relaxation का so there is intermittency of the labor contraction. Continuous नहीं है, spasm नहीं है, intermittent. Contraction के बाद there is a period of relaxation. So contractions are intermittent and contractions are not continuous, and there is a period of relaxation between two contractions. And the continuous contraction, अगर continuous contraction क्या होगा? Continuous contraction, you know, the labor contractions have their contraction of this uterus. There are muscles around the blood vessel. Those blood vessels are passing through the muscles of the uterus. Figure of 8 around. The blood vessels are passing through the muscles. Uterine blood vessel. जो placenta को maternal blood vessels आ रहे हैं, they are passing through the uterine muscle. When the contraction occurs, those vessels are obliterated. So there is ischemia during contraction. इसलिए pain भी होता है. The labor pain का एक cause is ischemia in the uterus. So the continuous contraction अगर होती, continuous contraction may cause the severe ischemia of the fetus because of the obliteration of the blood vessel by contracting myometrium. Muscle जब contract, अगर ये continuous होते, relaxation period is required for the supply of the proper supply of the blood, कि वरना ischemia हो जाए. So spastic contraction अगर हो of the uterus may lead to the death of the fetus, ischemic death. अगर ये इंटरमिटेंसी ना होती तो फीटस स्पास्टिक कंट्रैक्शन पे तो डेथ हो जाती, बिकॉज ब्लड फ्लो बिल्कुल रुका रहता है, इतनी देर के लिए रुका रहता. सो नाउ वी कम टू द स्टेजेस ऑफ लेबर. देयर आर 3 stages of labor. First stage is when onset of the labor occurs.
लेबर कंट्रक्शन स्टार्ट, वो तो ज़ाहिर है फर्स्ट स्टेज वहाँ से शुरू होगी. दैट इज स्टेज ऑफ, दिस इज स्टेज ऑफ डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स. इसमें होता क्या है, इनिशियली सर्विक्स तो बंद पड़ी होती है, यूट्रस अंदर एमनियोटिक सैक में फ्लूइड पड़ा है, सर्विक्स इज क्लोज, बट द लेबर कंट्रक्शन व्हेन द बेबी इज हेड आर प्रेजेंटिंग पार्ट, यूजुअली मैं हेड बोल रहा हूँ, समटाइम इट इज ब्रीच, बटक्स भी कभी कभी पुश होते हैं. आमतौर पर हेड इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, हेड इज पुश्ड इनटू द cervix, cervical stretch or dilatation of the cervix starts. So it is the stage of dilatation from the onset of the labor to the complete dilatation of the cervix. Complete dilatation कितनी होती है, हेड के मुताबिक पूरी cervix is dilated. ये there is no rim of the cervix left, उसका रिम फील नहीं होता. यूट्रस और सर्विक्स और वजाना एक ही वाल हो जाती है फुल डायलेटेशन जब हो जाए. सो दी फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द लेबर टू द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स तक जो स्टेज है, दैट इज नोन एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर. दिस मे टेक 6 to 24 आवर्स इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी. इसमें कई घंटे लग सकते हैं. In the first pregnancy, it may take 6 to 24 hours, first stage of labor. But with the duration of the shortened with the multiple pregnancy, कई pregnancies हो जाएं तो then this first stage of labor will occur very quickly. So the duration shortened and maybe only a few minutes, चंद मिनट के अंदर अंदर. मल्टीपल प्रेगनेंसी जब हो जाए, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज ओनली 4-5 मिनट के बाद उसकी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर शुरू हो जाती है. सो दी मे बी ओनली अ फ्यू मिनट्स एंड सर्विक्स सॉफन्स, वो एंड रिलैक्सेन का फंक्शन याद रहे, रिलैक्सेन causes the softening of the cervix. The cervix softens and dilates by the presenting part. Presenting part वो होता है which is being pushed into the cervix and that is usually head होता है. लेकिन sometime it is breech. ब्रीच मीन्स बटक्स वाली साइड, या कभी कभी एबनॉर्मल ओरिएंटेशन ऑफ द बेबी में कर उसको फिर ऑपरेशन करना पड़ जाता है. आमतौर पर हेड इज द प्रेजेंटिंग पार्ट और कभी कभी ब्रीच इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, वो दोनों डिलीवर हो जाते हैं. एंड हेड हो या ब्रीच हो, डिलीवरी पॉसिबल है. लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल शेप आ जाए, ट्रांसवर्स लाई हो जाए, तो फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल. फिर तो स्ट्रेच भी नहीं हो सकती, फिर सिजेरियन सेक्शन उस वक्त करना पड़ता है. So usually the presenting part उसको कहते हैं presenting part. Presenting part is usually head और कभी कभी breech होता है. So then this stage of the labor, baby is being pushed. Baby को push हम बोल रहे हैं, actually the bag of the amniotic fluid is being pushed. उसके अंदर baby float कर रहा है. और जब इट इज सर्विक्स में फिक्स होता है, देन द लोअर पार्ट ऑफ द बैग एमनियन में रप्चर ऑफ द एमनियोटिक सैक अकर्स एंड फ्लूइड कम्स आउट. इसको कहते हैं कि वाटरिंग, उसको कहते हैं, पानी निकल आया. दाइयों को भी पता होता है, एंड दिस इज वाटरिंग. और मैंने कहीं जिक्र किया था ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन टू असिस्ट द लेबर प्रोसेस, टू कॉज द मोर इरिटेशन ऑफ द सर्विक्स, उसमें लेबर तेज हो जाती है. सो रप्चर ऑफ द एमनियोटिक सैक अकर्स, अब फर्दर इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज द first stage of labor. This cervix is still closed, head is being pushed into the cervix, and this is dilatation of the cervix is taking place. Partially dilated cervix, this is partially dilated cervix, and head is being pushed into the cervix. This is full. So onset of labor to the full dilatation of the cervix, this is first stage of the labor. Now second stage of labor, from here, full dilatation of the cervix to the delivery of the baby. This is the most difficult stage. That is, इसमें baby is born. ये क्या है? Second stage of actual passage of the baby through the birth canal. Actual delivery of the baby through the birth canal is the second stage of labor. That is, baby passes through the birth canal and uterus, cervix, vagina, they are all lined up. Uterus और cervix और vagina वो एक कैनाल बन गई है. कोई सर्विक्स मरीज की तफरीक खत्म हो गई है. सो यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना आर लाइंड अप टू फॉर्म द बर्थ कैनाल एंड बेबी इज पुश्ड इनटू दिस बर्थ कैनाल. मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ लेबर. इस वक्त पेनफुल भी होता है. दिस इज नॉट ओनली यूट्रस, अराउंड द वेजाइना के अराउंड जो पेरिनियल मसल्स हैं, दे आर आल्सो बीइंग स्ट्रेच्ड.
So whole head of the baby is passing through those muscles through the birth canal. So they are being stretched, and this sends painful signals, and those painful signals causes more and more oxytocin production, and more abdominal muscle contraction, and more strong contraction. So maximum strong contraction of the uterine muscle aided by the abdominal muscle इस दौरान में होता है abdominal muscle, and the maximum force exerted वो जो 25 pound वाली का है for the expulsion of the baby, and 10 minutes to a few hours. इसकी ड्यूरेशन कितनी है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की इनिशियल फर्स्ट प्रेगनेंसी में लंबी होती है, कम होती होती है a few minutes तक रह सकती है। इसकी भी it may be only 10 minutes, मल्टीपल प्रेगनेंसी में 10 मिनट में बेबी डिलीवर हो गया, और कभी कभी a few hours। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, दिस इज डेंजरस। जितना ज्यादा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर दूर लंबी होती जाएगी, इट बिकम्स डेंजरस। सो इट इज अ फ्यू मिनट्स से फ्यू आवर। दिस इज baby cervix has fully dilated, uterine cavity, this cervix and vagina सारी एक कैनाल बन गई। baby being pushed into with the contraction of the abdominal muscle contraction, uterine contraction, they cause the push of the baby through the birth canal। if maximum circumflex जो डायमीटर है दैट इज हेड, कंधों का डायमीटर या पेल्विस का डायमीटर इतना लंबा नहीं, सबसे बड़ा डायमीटर हेड का होता है बेबी का। तो हेड अगर पास कर गया तो बेबी कैन पास। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या है? बेबी हैज बीन डिलीवर्ड। बेबी सेकंड स्टेज में बेबी डिलीवर हो गया, थर्ड स्टेज में क्या रह गया? दिस इज द थर्ड स्टेज इज द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा रह गया, दैट हैज टू बी डिलीवर्ड। यू नो दैट इज 10 to 15। उसमें कितना टाइम लग सकता है? कुछ भी टाइम लग सकता है। अब नाउ इट इज नॉट डिफिकल्ट, आसान है। दैट इज बेबी हैज बीन डिलीवर्ड, अब आसान है, मदर के लिए भी आसान है और डॉक्टर के लिए भी आसान है। इट मे टेक 10 to 45 minutes आफ्टर बर्थ, इट मे टेक दिस मच टाइम, एंड यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स। यूट्रस इज कॉन्टिन्यू, अभी तो ऑक्सीटोसिन मौजूद है, ब्लड में सर्कुलेट कर रही है, दैट इज काजिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। या कोई अदर फैक्टर्स हैं, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, अभी तो मौजूद हैं, दे आर काजिंग ब्लड में दे आर काजिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। सो यूट्रस कंट्रैक्ट्स टू स्मॉलर साइज। ये पहले तो इंटरमिटेंट कंट्रैक्शन, अब नाउ कंट्रैक्ट्स एंड इट बिकम्स वेरी स्मॉल। वो तो बड़ा था, पूरे एब्डोमेन को भरा हुआ था यूट्रस ने, अब फ्लूइड भी निकल गया है, बेबी भी निकल गया है, एमनियोटिक सैक भी निकल गया है, तो फ्लूइड तो इट रिड्यूसेस टू वेरी स्मॉल साइज, और 20 वीक साइज उसको कहते हैं। डिलीवरी के बाद 20 वीक साइज पे चला जाता है, 40 वीक्स का 20 वीक्स का हो जाता है। सो वॉल ऑफ द यूट्रस कंट्रैक्ट्स एंड प्लेसेंटा डज नॉट कंट्रैक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ये यूट्रन वाइल है, वॉल है, और ये प्लेसेंटा उसके अंदर लगा हुआ है। प्लेसेंटा लगा है, प्लेसेंटा में तो कंट्रैक्टाइल टिश्यू नहीं है ना, muscle uterus can contract, placenta जहां पे अटैच हुआ है that cannot contract, so this will contract, so this cannot contract, so there is shearing effect, that is ये contract नहीं करा, uterus contract कर रहा है तो ये it separates because of this shearing effect, ये contract नहीं करता, so wall of the uterus contracts, placenta does not contract, and this shearing effect causes the separation of the placenta। ये प्लेसेंटा सेपरेट होता है एंड वो फिर डिलीवर हो जाएगा। ज़ाहिर बाद औक़ात ये सेपरेट नहीं होता तो गायनेकोलॉजी दे इंट्रोड्यूस अ फिंगर टू सेपरेट इट। कभी कभी ज़्यादा मुश्किल हो जाए तो फिंगर्स कैन बी इंट्रोड्यूस टू सेपरेट द प्लेसेंटा। BA मेथड उसको कहते हैं। सो दी Brand Andrew method, BA stands for Brand Andrew method, manual separation of the placenta. But normally placenta is separated by this shearing effect. So the bleeding at the placental sites हिलकर वहाँ पे जहाँ अटैच हुआ वहाँ ब्लीडिंग तो होगी, वहाँ पे maternal sinuses है, but the contraction of the uterus causes obliteration of the blood vessel. blood vessel बंद हो रहे हैं, bleed करता है, so bleeding may occur from the site and average about 350 ml of blood is lost. Normal delivery में only 350 ml of blood is lost in this bleeding, and the contraction of the uterus reduces the bleeding. uterus अगर contract कर रहा है तो it is causing, as the blood vessels are passing through the uterine muscle, ऐसे through the figure of 8 उसको कहते हैं, figure of 8 के अंदर से blood vessel गुजर है, when it is contracting so blood vessel is being obliterated. तो contraction of the uterus, कभी कभी ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं, अर्गोमेट्रिन और ड्रग देते हैं इस वक्त, ये यूट्रस और कंट्रैक्ट करे, ब्लीडिंग रुक जाए। तो contraction of the uterus it reduces the bleeding, और local prostaglandin also cause vasoconstriction। ये contraction of the uterus prostaglandin की वजह से हो, prostaglandin uterine contraction नहीं, blood vessel को कंस्ट्रिक्ट करने वाली प्रोस्टाग्लैंडिन। पहले
So this is the third stage of labor. This is placenta. ये यूट्रस कंट्रैक्ट करेगा, ये प्लेसेंटा कंट्रैक्ट नहीं करता तो इट विल सेपरेट एंड देन प्लेसेंटा कार्ड, ये कार्ड है, कार्ड तो सेपरेट कर दिया ना बेबी को, तो काट के निकाल दिया ना, अम्बिलिकल कार्ड को काट के बेबी हटा दिया. दिस प्लेसेंटा हैज टू बी डिलीवर्ड, अम्बिलिकल कार्ड इसके, सो इट हैज टू बी पास्ड ऑन. This is placenta and this is cervical cord and this is uterus. So third stage of labor. So these three stages of labor इकट्ठी देख ले. That is the first stage of labor, cervical dilatation जिसको कहते हैं. This is the first stage of labor. Then the partially dilated cervix और fully dilatation तक first stage of labor है. Second stage of labor is delivery of the baby की stage है. That is the baby जब push हो रहा है पूरा, birth canal पूरी बन गई है. And the third stage of labor is the delivery of the placenta. ये प्लेसेंटा की डिलीवरी, ये 3 स्टेजेस ऑफ लेबर है. A few things more left बात करते हैं. That is, ये देख लिया हमने. लेबर पेन्स की बात है. What are pains? दर्द क्यों होता है? Each contraction accompanied by pain. जब भी लेबर कंट्रैक्शन होती है तो पेन होता है. वो पेन शुरू में क्यों होता है? Causes शुरू में hypoxia of the uterine muscle. अभी मैंने एक्सप्लेन किया. When contraction occurs, there is obliteration of the blood vessel. There is ischemia to the blood uterus. यूट्रस को भी इस्कीमिया है, फीटस को भी इस्कीमिया है, इसलिए स्मार्टिक कंट्रैक्शन नहीं होती कि इंटरमिटेंट कंट्रैक्शन होते हैं. सो दिस इस्कीमिया कॉजेज पेन. ये शुरू का जो पेन है दैट इज द इस्कीमिक पेन. जैसे हार्ट का इस्कीमिक पेन होता है, हार्ट का एंजाइना पेक्टोरस जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो ये यूट्राइन के शुरू की फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर में जो पेन होते हैं दे आर आल्सो इस्कीमिक पेन. एंड इसको कैरी करने वाली जो नर्व्स हैं दे आर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स, visceral nerve, and this is the part of the parasympathetic system. ये visceral nerve है. So the hypogastric sympathetic क्या कहते हैं autonomic nerves हैं, that is the visceral nerves carries the sensation for this. And then the second stage of labor जो more painful है उसमें ये भी शामिल है, plus there is addition of the visceral pains, that is जो perineal muscles and skin से pain जा रहा है stretch की वजह से. So the labor more severe pains due to the stretching and tearing of the cervix and vagina and perineum around, ये stretch हो रही है, tear भी हो रही है. So this causes the pain and this is carried by somatic spinal. This is spinal nerve, not the autonomic nerve. Somatic spinal nerves are responsible to conduct the sensation, so that's how the pain occurs. Now last, after delivery the uterus involutes. ये इतना बड़ा हो गया था, it will involute. Involution of the uterus, involution within 4 to 5 weeks after parturition. Delivery के 4 हफ्ते 5 हफ्ते यानी 1 महीने से 1.5 महीने तक के अंदर यूट्रस बिकम दी स्मॉलर साइज, जो ओरिजिनल साइज था. वेट ऑफ द यूट्रस इज हाफ ऑफ द वेट आफ्टर डिलीवरी जस्ट विद इन 1 वीक. यूट्रस इतना बड़ा हुआ था, 2 पाउंड हमने शायद जिक्र किया था ना वेट गेन इन प्रेगनेंसी में, तो उसमें जिक्र किया था. तो दिस इज वेट ऑफ द यूट्रस बिकम्स हाफ विद इन कितना 1 वीक. 1 हफ्ते के अंदर अंदर यूट्रस का साइज इतना छोटा हो जाता है, हाफ रह जाता है. इन नर्सिंग मदर मीन जो माँ बच्चे को दूध पिला रही हैं, this lactation also helps the involution of uterus because lactation में there is production of oxytocin and oxytocin and prolactin भी पैदा होती है, that causes the contraction of the uterus. So in nursing mother uterus is as small as prior to the pregnancy within 4 to 5 weeks. यानी 4-5 हफ्ते के अंदर 1.5 महीने के अंदर अंदर यूट्रस अपने ऑलमोस्ट नॉन ग्रेविड साइज पे, उस ओरिजिनल साइज पे पहुंच जाता है अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो. बिकॉज ऑक्सीटोसिन दैट इज ड्यूरिंग अर्ली इन्वोल्यूशन वेजाइनल. अच्छा, जब शुरू में डिलीवरी के बाद जो इन्वोल्यूशन शुरू हुई है तो डिलीवरी तो होगी बेबी की, बट एट द साइट ऑफ द प्लेसेंटल डिस्चार्ज, जहाँ पे डिस्चार्ज है, देयर इज ड्यूरिंग अर्ली इन्वोल्यूशन वेजाइनल डिस्चार्ज फ्रॉम द प्लेसेंटल साइट, जिसको हम कहते हैं लोकिया. जो डिस्चार्ज होता है वेजाइनल में डिलीवरी के बाद, वो कहाँ से आ रहा है? वो जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच था वो रॉ सरफेस हो गई, वहाँ से प्लेसेंटा जुदा हुआ, तो वहाँ से शुरू में तो ब्लीडिंग आएगी, ब्लड आएगा, तो उसको कहते हैं लोकिया.
1.5 to 2 वीक्स तक वो थोड़ा रहता है, कभी 1 हफ्ते तक, कभी 10 दिन तक, कभी दोबारा 14 दिन तक वो लोकिया डिस्चार्ज जारी रहता है। और शुरू में वो डिस्चार्ज इज ब्लडी, उसमें ब्लड होता है ज़ाहिर है, शुरू में रॉ सरफेस है, और आस्ता आस्ता उसमें ब्लड खत्म हो जाता है, इट बिकम सिरस फ्लूइड रह जाता है, एंड देन दी एंडोमेट्रियम इज कम्प्लीटली वो उस पे प्लेसेंटल साइड पे इट इज रीएपिथेलाइज, एपिथेलियम जब बन जाए तो इट इज वो स्टॉप हो जाता है, डिस्चार्ज डिसअपीयर्स, जब प्रॉपरली रीएपिथेलाइज हो जाए डिस्चार्ज डिसअपीयर्स, उसका टाइम 1.5 to 2 वीक्स लिखा हुआ है। एंड सो दैट्स हाउ द मैकेनिक्स ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट टाइम हम क्या डिस्कस करेंगे, बेबी डिलीवर हो गया, अब इसको lactation. Next time we are going to discuss the physiology of lactation, all the process. Finally दूध पिलाने से ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कुछ हमने डिस्कस की हुई है शुरू में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लैक्टेशन का प्रोसेस को हम फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन डिस्कस करेंगे। होप यू आर फॉलोइंग मी। इफ यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय page so that you may get this, and this is Sadqa Jariya for me and you as well. Thank you very much.